Mumbai has over 18 million people. The city, it's unpredictable. But amidst this chaos, there is one thing that is nearly 100% reliable. It's your lunch delivery. The Dabbawalas of Mumbai are an institution. A Dabbawalla is a guy who delivers homemade lunches. मेरा नाम किरण गवांदे है और मैं डब्बावाला हूँ। बिजनेस में ज्वाइन किया और तब से मैं 12-13 साल से काम कर रहा हूँ। खाली बॉम्बे में हम रोजाना 2 लाख डब्बा पहुँचाने का काम, खाली साइकिल और ट्रेन ये दोनों चीजों से मिलके डब्बा पहुँचाने का काम करते हैं। This is how the system works. The Dabbawalla comes to your home and picks up your lunch. He goes to the train station where all the other lunches are. They are sorted. For the area. He's in charge. स्टेशन दादर। यात्रीगण कृपया सावधानीपूर्वक कतार में उतरें। मेरे हस्बैंड जल्दी निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो इतना जल्दी टिफिन बनाना नहीं होता है। तो ये 10 बजे आते हैं तो मेरा पूरा टिफिन मैं उनको भेज सकती हूँ हस्बैंड को ऑफिस में। लंच कैसा लगा? बहुत अच्छा था। बस अच्छा ही था। वो आलू को भी बनाया था ना। आंटी डब्बा किसी और को चला गया लगता है। Play in front of this door again. I'll chase you down the street. कल खाली डब्बा भेजने के लिए आपका शुक्रिया। आज भेज रही हूँ पनीर, मेरे हस्बैंड का फेवरेट ईला। क्या? ना थैंक यू ना नमस्ते। तो क्या खाने का डिब्बा पहुंचाना भी इतनी बड़ी बात हो सकती है कि जिसके लिए हम अपने आप को नायाब कहें? पर मुंबई के डिब्बे वालों का ये साधारण सा लगने वाला काम वास्तव में असाधारण है। और अगर अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने इनके काम को 6 सिग्मा रेटिंग्स में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज से बेहतर बताया है तो कोई बात तो जरूर होगी। 1890 के करीब सिर्फ 25 ग्राहकों से शुरू हुए इस कारोबार को इतनी कामयाबी की उम्मीद शायद किसी को नहीं रही होगी। फिलहाल इस कारोबार में करीब 5000 लोग काम करते हैं जो लगभग 5 लाख लोगों को उनके घर का खाना पहुंचाते हैं। जाता है
शांति से खड़ा रहता है, बिल मारेगा। हमारा जो फिक्स टाइम ग्राहक को देता है वही टाइम में डब्बा मिलना चाहिए। धोबी घाट में सुबह सब 6:30 से 5:30 बजे उठते हैं और शाम में 9 बजे तक का काम होता है। डिपेंडिंग ऑन द ओनर करता है, जिसका ज़्यादा कपड़ा रहता है उसको रात तक का काम करते हैं और बच जाते 12-11, जिसको ज़्यादा कपड़े रहते हैं वो समय से लोग हिसाब से काम करते हैं। भाई ये नहीं होता तो इतने गरीब नंगे घूमते। भाई किसी की औकात ना हो तो 5000 की या 200-300 की तो 100 रुपये का तो आदमी पहले सकता है ना। उम्र मेरा 18 साल है। पगार 200 रुपया है। उसके साथ साथ कोई गरीब आता है उसको 2-4 हज़ार दे जाता है गरीब को। ऐसा हम लोग करते हैं। दिन में हम लोग कितना काम करते हैं, अक्खा दिन रखा रात 2 घंटे। उम्र तो मेरा है इस समय 55 का। तो बचपन से यहाँ पे हो? बचपन ही पैदा। When I grew up, this is how we did clothes also. This is totally different than any place. No, the method, not the amount. Okay. My name is Dinesh. I born up and rise up in the slum itself. I still live in the slum. Now, one question in the mind: slum. This is the slum in Mumbai, which is something new to see. It's like totally opposite of the word slum. Like 85% employment, well organized, people are friendly, people are educated. So this slum is also known as the Asia's largest slum. How much electricity? The space is of 575 acres of land, almost like 10 football ground. Million of population is the official, unofficial is 1.5. So friends, today we'll explore the slum and see it's a 5-star slum. I'm not kidding. Let's go and check it. When you think of a slum like the one behind me, you think of poverty, danger, and unemployment. That's what many people think when they see the third largest slum in the world, Dharavi in Mumbai, India. From above, it's where 1 million people live in tiny houses. But from below, this is much more than a slum.
It's a place that generates $650 million every year. It's where I saw a huge recycling business, pottery business, leather and garment business. This product was made in Dharavi, not Milan, not New York or Paris. Here, I struggled to find someone who was not working. Even inside houses, women were working. And those that were not, I found them cleaning. Because even with dirty roads and no toilets, houses are clean inside. Dharavi is an economic powerhouse filled with huge businesses, engineers, artists, and hard workers. It just so happens to be called a slum. That's 1 minute. Don't make your hand hard. Softly. Hey.